Hello. बहुत ही मेरा मूड भी ना इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. Trusting you, and nothing else matters. पता है मैं ऐसे ट्यून करता था बचपन में. Like this was the song. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something. Open mind for a different view, and nothing else matters. They never care for what they do, never care for what they know, but I know. No matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who you are, and nothing else matters. Never care for what they do. कैसे? Never care for what they know, and I know. Never open myself this way. Life is ours, we live it already. All the
something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they say, never care for games they play, never care for what they do, never care for what they know. And I know down, 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 da 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 so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who you are, and nothing else matters. ये फेड आउट करना बहुत पसंद है गिटार पे. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट मेरे हिसाब से. एक सेकंड, मुझे चश्मे साफ करने हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा. बाय द वे, आई डोंट नो इफ यू नोटिस बट आई डोंट हैव द पीछे वाली लाइट्स टुडे, बिकॉज एक्चुअली उसकी वायर्स निकल आई थी एंड मैंने इनको ठीक भी कर दिया था, पर वो चिपकाने में इतना दिमाग खराब होता है. जस्ट थ्रू देम अवे एंड आई डिडंट हैव अ सोल्डरिंग. घर पे होता तो मैं सोल्डर कर देता फटाक से. इट वाज सच अ टास्क. मेरे को अननोइंग हो रहा था. मैंने कहा ले लूंगा यार. वैसे भी इट्स नॉट लाइक इट्स फॉर 3 pounds, तो मैं नया ले लूंगा. इट्स फाइन. सो आई नीड टू गो टू प्राइमार्क एंड बाय देम अगेन. क्या हाल है बिट्टू देव? मुझे आज पुराने ओल्ड रॉक सॉन्ग्स गाने का मन है. So if anybody knows around, actually स्किलेट का हीरो याद है किसी को? and like you know like आज थोड़े पुराने गाने गाएंगे, ठीक है? I'm just a step away, breath away. What? What's the song? मैं भूल ही गया. सही चल रहा. इंडिया में सब ऐसे. It's like you're all right? Yes, how are you? What was the song? All right. ये नहीं गा रहे हम. वो गाते हैं. वो एक गाना है ना, आई कैन रिमेम्बर इट, लिप्स ऑफ एन एंजल. किसी को याद है गाना? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. लाइक मेरे को बिल्कुल याद नहीं है. कैसा था ये? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डी पे था. थोड़ा सा सुनना पड़ेगा.
I just need to hear the first two lines. कैसे था? यार मेरा फर्स्ट है. Oh, I have the transposer thing, no? ये मैंने अपने बच्चों के लिए डाला था. Is it on? It's on. Things are so useful. -2 हो रखा है क्या? Yeah. कैसे है? Apologies. कैसे है? क्या बज रही है? मैं क्या हो गया मुझे विनायक? Bro. इससे ऑब्वियस चीज नहीं हो सकती है दुनिया में. मैं बोर हो भी गया, मैं बजा भी नहीं रहा. Honey, why you calling me so late? It's kinda hard to talk right now. I gotta whisper 'cause I can't read too loud. Well, too loud. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice. बड़े दिन बाद ही सुन रहा हूँ गाना. अच्छा लग रहा है. But too high for me, no? It's too high for me. It's too high for me. It's too high for me. But I like this song. I like this song. Yes. Let's sing this song. कहाँ जाएं? कितना नीचे जाएं? That's the question. Fucking hate this scale, but it's okay. Yeah, I fucking hate this scale. Ooh.
कैसा है ये? कुछ गड़बड़ है. क्या है ये? कितना गंदा है. Cause I can't be too loud. Well, my girl is the next room. Sometimes I wish she was you. I guess I never really moved on. I really get to hear your voice saying my name. It sounds so sweet, coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak. And I never wanna say goodbye. Wouldn't go, you make it hard to be faithful. With lips of an angel. मेरे को नहीं बहुत गलत गाना लग रहा है वाला सिंग. लाइक आई एम रीडिंग दिस लिरिक्स, पहले तो समझता नहीं था, अब मैं पढ़ रहा हूँ. But girl, you make it hard to be faithful. What is wrong with this guy? With the lips of an angel. What a stupid song, bhai. It's funny that you're calling me tonight. मैं बहुत interested हूँ. And yes, I dreamt of you too. भाई ये तो भाई cheating होने वाली है. Does he know that अच्छा इस बंदे की भी बंदी है, उस बंदी की का भी एक बंदा है. Does he know you're talking to me? Does he know you're talking to me? Will you start a fight? Lol. No, I don't think she has a clue. What the fuck? Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. Really good to hear your voice sing my name. It sounds so sweet, coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak. And I never want to say goodbye. Girl, you make it hard to be faithful. Lips of an angel. यहाँ सोलो है, सोलो गाते हैं.
It's really good to hear your voice saying my name. It sounds so sweet, coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak, and I never wanna say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful. Lips of an angel. Honey, are you calling me so late? भाई ये गाना बहुत गलत है. इसके हर लिरिक बहुत गलत था, बहुत ही गलत था. मैं शुरू से पढ़ के सुनाता हूँ. Honey, why you calling me so late? It's kind of hard to talk right now. मैं किसी के साथ. Honey, why you crying? Is everything okay? I gotta whisper cause I can't be too loud because सारे कोई किसी और के साथ. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice saying my name. It sounds so sweet coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak. It weirds. And I never want to say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. What the fuck is wrong with you, bro? It's funny that you're calling me tonight, and yes, I dreamt of you too. Does he know you're talking to me? Will it start a fight? Uska bhi banda hai bhai. No, I don't think she has a clue. Well, my girl's in the next room. Sometimes I was. It's really good to hear. भाई बहुत ही गंदा गाना है. Lyrically, riff crazy है. मैं बिल्कुल कहीं मैं in no world am I okay with people cheating. I feel whoever wrote this song उसी के लिए गाना बना है. ये जो मैं बोलने वाला हूँ. Fuck you. Anyways. The new researcher in me is obvious, like everything is subjective and everything. But ठीक है भाई, let's not overgo there. ठीक है. So I'm not gonna say. Anyways. और old rock songs में और कौन सा बढ़िया गाना आता है? Oh, I think I know what song I need to sing next. भाई ऐसे आज तो full विनायक class 6 mode on है. I think yes है ना? Oh, I think यही है. किसी को पता है कौन सा? किसी को पता है कौन सा गाना है ये? फास्ट करना पड़ेगा.
किसी को पता है गाना कौन सा है? Hello, my friend, we meet again. It's been a while, where should we begin? Feels like forever. Within my heart, memories, perfect love that you gave to me. Oh, I remember when you are with me. I'm free, I'm careless, I believe above all the others. We'll fly, come tears to my eyes. इस गाने का नाम My Sacrifice. We've seen the share of ups and downs, and how quickly life can turn around in an instant. It feels so good to reunite within yourself and within your mind. Let's find peace there when you are with me. I'm free, I'm careless, I believe above all the others. We'll fly, comes tears to my eyes. My sacrifice, my sacrifice. Oh, oh, when you are with shit, I'm free, I'm careless, I believe I'm better than above all the others. We'll fly, become tears to my eyes. My sacrifice. I'm careless, I believe above all the others. We'll fly, this brings tears to eyes. 'Cause when you're with me, I'm free, I'm careless, I believe above all the others. We'll fly, these bring tears to my eyes. My sacrifice. लॉल इट इज ग्रीन. मैं बहुत गंदा गया, बहुत दिन में सुन रहा हूँ ये सब. आज मैंने तीनों गाने बहुत शिट गए. I think वो used to be, you know, ये like ये वाले type. It's like खुल के गाने वाले गाने. क्या हो रहा है आज?
आई हैव अ फीलिंग, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि 1 साल पहले इसी दिन यही लोग आए थे. It's so easy for me to say, no? क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सच है. I'm so sad वो गेम्स चली गई हमारी ट्रिविया वाली. We haven't played trivia games, no? जियो गेसर खेले? मैंने आज तक जियो गेसर नहीं खेला. तुम लोगों ने जियो गेसर खेला है? Let's try it, no? Wait, I need to clean my stupid. Where the fuck you love that game? Oh, actually this helps, no? If I close this. I have also never played it. हमारे पास 1 minute है. Okay, so people actually see. यहाँ कोई देखते हैं रेस्टोरेंट. We can't go. हम लोग जूम इन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं. वावा कस्टम टीज Cone One Studio. How do we guess it though? कहीं ना कहीं तो लिखा होगा एड्रेस. बार्बर स्टूडियो भाई कहीं ना कहीं तो एड्रेस लिखा होगा. कोस्टल एरिया कहीं भी एड्रेस नहीं लिखा. कट थ्रोट बट दीज लुक यूरोपियन देश है फॉर श्योर. यूरोपियन देश है कोई. आई एम लिटरली लुकिंग फॉर अ मैप राइट नाउ. देखते हैं. वाइट है इनके गाड़ी के पीछे वाले. इट मीन्स इट्स यूरोप ओनली. वो वेट कुछ है यहाँ. ऐसे नो पार्किंग टाइप कहाँ होगा. यूएस लग रहा है. लॉन्ग बीच. Where the fuck did you see that? Long Beach. US में कहाँ लेकिन? California, okay. Where the fuck is California? इधर कहीं होगा ना? Wait. हमारे 20 सेकेंड है. यहाँ कहीं है ना California? I'm very bad at this. Oh. नहीं ला. Los Angeles. Guess. Let's see. Oh, I was 57 kilometers away. That's not bad. Oh, very nice. A long beach था. भाई पितृदेव तू तो गलत लेवल पे खेल गई. मेरे को कैलिफोर्निया देखा मैंने फटाक से बस लॉस एंजल्स. ये 57. That's not bad यार. That's not bad at all. But how the fuck did you see that? You guys want to turn the thing, but no. कैसे तो clearly. Nice, Bitdev, crazy. अच्छा यूएस नहीं. ये देखो ये बिल्डिंग्स तो मुझे यूएस वाली नहीं लग रही. ये तो प्रॉपर यूरोपियन देश लग रहा है कोई. मैं हर बात पे यूरोपियन देश ही बोलने वाला हूँ मुझे लग रहा है. ओ there's a ये लैंग्वेज कोई पहचान सकता है. कंजर्वेटिव म्यूनिसिपल. Is it France? Is this French? I'm gonna guess it. फ्रांस में लेकिन कहाँ हमें ये भी गेस करना पड़ेगा. Do you want me to guess Paris? Just like that.
ओ फ्रांस तो है, आई कैन लिटरली सी फ्रांस यहाँ. आई थिंक इससे हमें बहुत आइडिया होने वाला है. आई कैन सी द फ्रांस बस. ये क्या है? Yeah, I think it's Paris. Wait. Okay. Paris. मैंने डाल दिया इधर. I'm gonna guess. 26 kilometers away. Nice. We were in Paris. We were very close to Paris. भाई तुम लोग तो crazy खेल रहे हो. ये तो दोबारा वही जगह आ गई मेरे हिसाब से. I think this is the exact same place. Yeah, this is the exact fucking same place. रुक जाओ. I'm gonna be 26. What the fuck? भाई पर मेरा माउस नहीं दिख रहा मुझे उसमें. या इसे कहाँ थे हम? कोई वो बुएनो टाइप जगह थी ना. मैं यहाँ डाल देता हूँ. $27 kilometers. ओ वो इधर ही था. ओ तो हम थोड़ा एक्चुअली वो डॉट पेरिस पे था. ओ डॉट पेरिस पे था. सर्च गूगल में. आई डोंट वांट टू. ये जियो जैसा. नेक्स्ट लास्ट करते हैं हम. अबे आई थिंक ये ब्रोकन है. Why is this showing बार बार? ये मुझे नहीं चाहिए ये. Anyways, I think let's just feel good that हम इतना ज़्यादा अच्छा खेले. हमने पूरे वर्ल्ड में within 50 kilometers 2 जगह ढूंढ ली. It's fine. It's we won the game. हम लोग ने 2 ट्राई करे और दोनों within 100 kilometers थे in the fucking world. तो हम जीत गए. हमें गेम आती है. I'm actually watching streams today जो लोग जियो कैसे खेलते हैं. भाई वो लोग crazy shit कर रहे होते हैं. Do you guys wanna play this one like once ऐसे कभी कभार? I think मैं तो एक और खेलने का मन कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा. जियो कैसा एक और खेलते हैं. It's weirdly addictive. अबे ओ ये भी फ्रांस है. ये भी फ्रांस है. ये the fuck is this? $3.3 kilometers. ये भी फ्रेंच लग रहा है मुझे. काफी फ्रेंच नहीं लग रहा ये. नो दिस इज यूके. आई टेल यू व्हाई हाउ आई नो. फक विनायक. इसके पीछे येलो है, इसके आगे वाइट है गाड़ी के. दिस इज यूके. नहीं बट ये तो फिर से हाँ पीछे येलो. अगर हाँ ये दिस इज यूके. ब्लैक टैग कैप्सी. लंदन है. बिग बेन दिख गया मुझे. द फक. लंदन नहीं पहचानूंगा मैं. ये रहा बिग बेन. व्हाट द फक इज दिस? मैं इतना क्रेजी जूम इन करूंगा. दिस इज यूके नहीं, दिस इज लंदन. मैं रोड तक लेके जाऊंगा ये वाली. ठीक है ये तो बहुत ऑब्वियस है. फकिंग हेल. बिग बेन दिख रहा है. व्हाट द फक.
पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने गाड़ियों के नंबर प्लेट से पहचान लिया। यूनाइटेड किंगडम। हम जाएंगे सीधा बिग बेन पे। यानी किस साइड है वो देख लें। मैं अच्छा उस साइड है, मैं ये भी समझ गया। ऑक्सफोर्ड बाथ, हमें राइट में जाना है। यस, जल्दी विनायक जल्दी। वो रहा टावर ब्रिज, बरो मार्केट, बकिंगम पैलेस। यस, वी वेरी क्लोज। वेस्टमिंस्टर एबी, बिग बेन, ये वाली रोड है। मैं सालों की रोड पे तक जाऊंगा और ये अंदर की तरफ है। पार्क आई थिंक यहाँ है। हम 200 मीटर। एपिक भाई, एपिक। 200 मीटर। अब बोलो। एक्चुअली 200 मीटर स्पीड मैच मेरे को लग रहा था इस साइड होगा, बिकॉज यहाँ पार्क है। मैं दिखाऊं मैं कहाँ रहता हूँ। आई लिव, मेरे बताइए। Yeah, this is a beautiful park. This is my favorite place in the entire London. This is a beautiful park. But मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ रहता हूँ। Literally. यहाँ कहीं, मैं आगे नहीं बता रहा। Not because मैं बता नहीं सकता। देखो आगे येलो है। Is it पीछे वाइट है क्या इसमें? ये भी मुझे यूके लग रहा है ऑनेस्टली। या यूके, सॉरी। नो यूके नहीं है। देखो पीछे येलो आगे वाइट, या यूके है। बट आई थिंक दैट्स जस्ट, हाँ दिस इज यूके। दिस इज यूके फॉर श्योर। और एक्चुअली नो, इट्स नॉट। ये जापान है। Yeah, looks Japan because look at this. Actually looks like Korean. I think ये alphabet's Korean है. I'm not sure वैसे. Everyone is driving on the left side, I think. This doesn't look like Japanese. I'm gonna guess South Korea. टोक्यो था। लॉल। दिस लुक्स फ्रांस अगेन। अबे ये तो वेस्टमिंस्टर है। अबे ये वही वाली रोड है, बिग बेन वाली। ओके कूल। अब हम देखते हैं कितना। ये तो भगवान ने भेजा है मुझे ये सॉल्व करने के लिए। Everything I've done alive में has led to this moment of me actually choosing this street. I have to be within 10 meters, okay? Fuck 10. I have to be within 5 meters. Hi, Big Ben. What up? Oh, fuck.
ये तो फ्रांस, हाँ, I think this is the free version, I think. So it's like to make you it's very like सारे Paris, Los Angeles, like you know these are very obvious ones, but ठीक है. Anyways, 43 meters is good. I hate the music though. I hate it. Good night. शिवम, can I post your video करते हुए? मैं वो LCM को तो दे रहा हूँ because I have to submit 2 videos out of all the videos that are taken जो LCM catalog में जाएंगी forever और ever London College of Music में वो store होंगी and everyone whoever comes to my course can see that video. Thank you, Shivam. उसमें तो I do want to put you. I also submitted yours for the Instagram page of London College. I will, matlab, if you want. This is the best part about Indian people. उसमें actually पूछना चाहिए लोगों से कि उनकी वीडियो डाल रहा हूँ, बट जनरली इंडिया में मेरे को पूछना ही पड़ता है. यहाँ पर तो फोटो मेरे सामने किसी ने किसी की ली और वो बहुत अच्छे दोस्त थे एंड दे वर लाइक यू डिडंट आस्क परमिशन फॉर इट एंड आई वाज लाइक वो तुम्हारे दोस्त हैं. हाँ तू यार दैट्स द थिंग, तू पतला बढ़िया लगता है. आई डोंट थिंक तू ऐसे. guys, you guys wanna see Shivam? I'll show you Shivam. Documents. I have 2 Shivams. उसके 2 टेक लिए थे मैंने. अभी ना कर रहे. इंस्टाग्राम पोस्ट में डाल दूं हैं. ये देखो शिवम. अच्छा बजाया बंदे ने. बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए पता क्या था. सो इस इंस्ट्रूमेंट को बनाते हुए मैंने जानबूझ के हर लिम्ब में बहुत ही अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट डाला था. सो द राइट आर्म इज मेलोडिक, जो सुरीला होगा. द लेफ्ट हैंड वुड बी लाइक साउंड इफेक्ट, लाइक इट वाज लिटरली साउंड लाइक यूर अ ट्रांसफॉर्मर आर्म. हे सिरी लॉरा द लेफ्ट, व्हाट द हेल. एंड द राइट leg would be like a snare and the left would be claps. And head would be like a binaural. So I'll tell you one thing. और कुछ audio engineers थे, they loved the head thing because वो head track था and they're like, oh, it's tracking my binaural. Shivam loved the right hand because he's like, this is very melodious, I like it. एक बंदा है, he is in my like he does module with me. He's also a game producer. He loved the left arm because it sounds like a sound design, because वो proper sound design based है. Like if you go उसमें ऐसे होता हूँ ऐसे करके. So he was just fiddling around. Amber he's a drummer, so he was just fiddling around with his legs. So मेरे को बहुत interesting लगा that everyone who came, which was very interesting to me, they all choose a particular limb which they particularly like. Obviously one thing जो बहुत ज़्यादा लोग, I think everyone was doing, was थोड़ा बहुत leg action, because they were liking थोड़ा सा groovy shit. तो मेरे बहुत interesting था ये सब. And of course there were just people who was like तेज हाथ घुमा रहे हैं and you're not doing anything. But ये वाले वो लोग थे जो observe कर रहे थे कि what is happening, and they chose their preferred sound.
So like the Shivam's video is so different from Amber. Amber's video is so different from I forgot his name, man. Like this guy loves the left hand, and he will mostly play with left hand. देखना ये देखो. Like he doesn't like the melodic stuff. So he बहुत interesting था. तो मेरे को पता TikToker lol. और मेरे जो प्रोफेसर है ना उनको मैंने दिखाया द पैच एंड इज लाइक टिल डेट दिस इज द बिगेस्ट पैच ही हैज सीन फॉर दिस मॉड्यूल. बहुत खुश हुआ सुन के. इट्स लाइक आज तक पूरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना नहीं किया कभी. तो मैं बड़ा खुश था क्योंकि वो पैच ये है. इट्स वेरी बिग. दिस इज अ पैच. ये पूरा एक पैच है. पैच इज लाइक yeah, this is a patch. मेरा मतलब मेरा पुराना पैच भी आई थिंक मेरे हिसाब से काफी बड़ा था. दिस वन. दिस इज माई अदर पैच जो मैंने दिस इज एक्चुअली इट्स स्मॉलर देन दैट बट दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. ये तो मुझे बच्चों वाला लग रहा है. एक्चुअली ये पार्ट बहुत कूल है. ये तो मेरे को लगता है बेचने वाला सामान है. इसका प्रेजेंटेशन भी ब्यूटीफुल है आई थिंक. ये काफी कूल पैच था ये. दिस इज ऑल्सो पैच. इतना सा भी एक पैच होता है यार. ये भी एक पैच है. डोंट सेव. ये भी एक पैच है. ये भी एक पैच है. ये भी एक पैच है. कितने पैचेस खुले हैं. ओके. ये भी एक पैच है. शिवम की दूसरी वीडियो भी है एक. इसमें नाचता है प्रॉपर. There is one part where he knows where it triggers and he jumps around with it. It's pretty cool. I think you did a good job, Shivam. You're one of the only 8 people who've understood how it works. Actually, everyone understood, but थोड़ा depth में घुसने की कोशिश की तूने. It's like कुछ लोग तो they were just checking the response time of it. And they were like, just कि ये कितना latency है ना. Okay, fine man. If that's how you live your life, it's fine. एक बंदा था. वो बंदा हम सबके पास इंडिविजुअली गया. उसने इतनी बकवास पे लिया ना कि मुझे एक बंदे ने बोला मैं ओ माय गॉड. वो बंदा ने इतनी बकवास की. और द फनी पार्ट इज आफ्टर आवर एग्जीबिशन वी ऑल मेट आउटसाइड. Everyone was having a smoke. I was not. I was having a mango flavored caffeine drink. It was very bad. It was pathetic. It was very very bad. तो वो सब everyone like do you remember किसी ने आके तुम्हें तंग किया. किसी ने आके ऐसे like there was this one guy. Everyone was like, उनका say he was wearing a blue shirt. Mine was too. Did he come with this guy? Yeah. And we all fucking realized it was the same fucking guy. And he just went to everyone and tried to annoy them. I was hilarious. I'm like, he was wearing a blue shirt. Yeah. He came with this guy. And everyone shared what that guy said to them. And I was like, what?
Well, that was even भाई वो तो प्रॉपर मिसबिहेव करके आया कुछ लोगों के साथ. It was weirdly very tiring. Anyways. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Try from the world. May God bless you. Happy birthday. Trying to hide. Happy birthday. Trying to hide. Happy birthday. Happy birthday. Trying to hide. I'll tell you a very interesting story. अभी कृति joined, right? कृति और मैंने बहुत टाइम से बात नहीं किया. I'll tell you how. मैं कितने साल से कृति को मैं जानता हूँ 2002 से 22 साल हो गए. I'll tell you how. जैसे हमारी नर्सरी में 1 2 3 4 सेक्शन होते थे. मेरा 2 होता था, इसका होता था 3. लाइक B होता था मेरा, इसका होता था C. I'll tell you what pops in my mind. What's my most vivid memory of this girl. I remember it very clearly. She was a talented... I think she was the most talented human I had ever met as a child because of two things, okay? She was the best dancer in our entire batch. जब हम primary wing में थे. I think she was in some... I'm pretty sure she must be into theatre and she was very good with speaking. And she was also... Okay, I remember it because as a child मेरे दिल पे लगी थी ये बात, ठीक है? हमारा था Western Music Competition. And मैंने बहुत मेहनत करी and I sang this song. And she didn't... और मैं proper prep करके आया था, ठीक है? I think she didn't even prepare a song. The normal songs जो गवाते हैं classes में, she sang that and she sang Dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip. That's the song. I'm not kidding. She was like, she had this stage presence of छोटा सा child हूँ, and she did this and she sang so fucking good. Like I remember मैं as a child मैं देख रहा हूँ कोई कैसे गा सकता है इतना अच्छा. Like it was so good. Obviously she won and I came second, but or I don't know if I even got a thing मतलब, but she won and I remember feeling that इसके ये जीती क्या, ये तो ये it was a fucking performance. It was a beautiful amazing performance. Like, and I remember the hall it was in. I remember मुझे नहीं पता stage right side or left side. I just remember how well she performed, you know. And I remember I did not realize कि कोई इतना अच्छा गा सकता है. And बड़ा अच्छा था. फिर मेरे को लगा था मैं इंग्लिश गानों के लिए नहीं बना, मैं वापस हिंदी में घुस गया था. मैं हिंदी choir में ही था. And I think I didn't sing like उतना English for a few years. Not because of this incident. ऐसा कुछ नहीं, मैं गाता तो था ही. But she was a very good singer. Like she was very talented. Everything, and she picked on things very fast. Like I think she even joined the choir and she picked on things very fast. So I remember that I was amazed how her brain worked musically. Because she was a good melodic singer, but she was a dancer. That means her rhythm was fucking insane. अगर वो यहाँ होती मैं कभी नहीं बोलता ये. And I don't think हमने 10, 12, 15 सालों में बात करी है, but मुझे याद आया how that's
That's the first memory that I can think of. Like every time कोई मेरा पुराना दोस्त आता है, I generally think the first memory I think of them. But this is a nice memory, तो मैं सोचा थोड़ा share करूँ. I have no idea what she's doing अभी क्या नहीं. I don't care honestly. Like not care. Like I shouldn't be bothered about it. But like I thought मैं ये बड़े interesting episode share करूँ. She was in C. पुरानी कहाँ होगी यार चित्रदेव? You're as old as Trina Hyde ऐसे तो. Are you saying Trina Hyde is old? On that very note, Trina Hyde, I think we have like I just realized चित्रदेव Trina Hyde हमारा काफी long relationship हो गया है ना? काफी time से हम जानते एक दूसरे को. Do you also have sections named after flowers? No. We had so many sections, इतने flowers पता ही नहीं होंगे स्कूल को. हमारा like at least मैं जब तक था तब तक तो S तक था. But जब हम I came to fight like I think मैं 5th class में हो गया था तो हमारे sections nursery के I think O तक like KG first class के O तक चले गए थे. So A B C I don't know how many I think हाँ nursery KG 18 17 तक जा रहा था. 16 तक जा रहा था, which is a lot. Well, technically, I know you since Kapav album release. That is true. Close to 2.5 years. Kapav. Do you know Trina Hyde? Me and Pitudem knew each other because she sold me a cassette. बेचारी को पे भी नहीं किया था हम लोगों ने. Close to 2.5, the most embarrassing moment. Only for your UKG and LKG though. I had like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. पर हमारे केस में it was I think nursery 8 KG था. but जब literally थोड़े से बड़े वो 16 तक चला है. मैंने बहुत बड़ा स्कूल है भाई. मैं जितना बड़ा हो रहा हूँ मुझे रियलाइज हो रहा है काफी थिंग्स हैं एजुकेशन चीज़ों में हमारे कंट्री में जो थोड़ी चेंज होनी थी. आई एम श्योर हो भी रही होंगी. Sections were numbers, yeah, till nursery KG. फिर first से it was alphabets. Rivers names हमारा था, but that was for house names. I think that's true for everyone, no? Everyone, हर school में house names should have to be river names. दिग्गज लोग like गांधी. It's so weird no saying that मैं गांधी में था. I don't know how you say that to her. गांधी जीत गया नेहरू से. हैं गांधी था what? गांधी बुद्धू नेहरू what was the fourth one? I'm just imagining सब चला रहे नेहरू बुद्धा like and the winner is नेहरू. अबे नेहरू वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं. अरे गांधी वाले बेस्ट होते हैं. I'm like what the hell? East or West, Buddha is the best. We had earth, water, fire and nothing wrong with all of this. Oh my god, Trina, that is fucking cool. That you lived The Last Airbender. That is cool.
What were you? A रख लेते, shake my head. Nature, oh my god, air ही रख लेते. You're so right. What was yours? वैसे तुम लोग का house क्या था? Like I'm very curious. सबका house का नाम क्या था? विवेकानंद. Oh, Vivekanand sounds like the blue house. I don't know why, but it sounds like the blue house. Let me guess. Wait. Let me guess. What color was what? ठीक है. मेरे हिसाब से सबका अगर 4 है तो it has to be green, yellow, blue and red. And let's start with Pitradev. Gandhi sounds very yellow. Buddha sounds red to me. Nehru sounds green. Vivekanand sounds blue. With fire, water, earth, and nature, it sounds water is blue, fire is red, nature is green, and earth is yellow. I'm sure this is right. If it's not, then I don't know. And since Shivam, you were in red. you were in nature. You were greenhouse. That is nice. You were greenhouse, lol. Prakriti house. That actually makes sense why your color, like तुम्हारे houses got water. That actually fucking makes so much sense. I think DPS has like 6. They have like Jhelab, Chenab, Ravi. There's purple also. There's orange also. Janab is purple उसमें. Orange मैं भूल गया. You didn't have what? Pitradev? That is very cool. And I... This is so cool that you had green, orange, yellow and purple. That's very unique. Also very weird, very... Colorblind लोगों के लिए तो सोचा ही नहीं थोड़ा. Blue था but they changed it. क्या? Oh, okay. Gandhi is green, Buddha is orange, Vivekanand is yellow, Nehru purple. By the way, I was right now with China Height and Shivam. The color. I have a question. Is any one of you colorblind? Here's the thing, even if you were, you wouldn't know. He had, had a heated debate about philosophy and love, and our brain is fried. Heated discussion. What was your stance in it? Yeah, but actually, who won? Try hard asking the right questions.
I think that's just proves that world is more contains more subjectivity than just objective thoughts and ideas, because both can exist. An ideal and a non-ideal can also exist in this fucking random. Idealists should exist. I mean, मतलब it's something जो हमने बहुत romanticize होता हुआ देखा है in movies, but how often do you actually? Maybe you do, but like it's like sometimes you experience something जो इतना vivid होता है, then you're like, okay, what if यही है सच्चाई, which is obviously restricting your thoughts, and I don't know, man. I fucking don't know. I have a question with everyone who thinks it exists. Have you found it? But I also feel जिस दिन तुमने सोच लिया है when you're with someone that this is the ideal love, there might be an instance that you start taking it for granted. You know, like this is ideal. In an ideal case, like if you imagine that this is the ideal case, you'll be like, if this was an ideal case, like it could also ruin a relationship. You know, saying that this is ideal, so an ideal partner would accept me for whoever I am, and you're actually doing something or taking her for granted or him for granted, or you know, doing something जो मतलब पता नहीं, get take like making an excuse out of it basically. मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. Actually, that's not true. I'm yet to find it, but yeah, exactly. Like PV is equal to nRT 0 at 0 Kelvin. How often do you find 0 Kelvin? That's very well put, Pitradev. Maybe an ideal version has like sub clauses where they also keep putting effort, I guess. And it shouldn't matter to you. And they're unaware that it's ideal. Okay, as soon as you're aware, I don't know, man. I also feel थोड़ी life में mystery होनी चाहिए. इतना like I told Arpis trying to hide that I'm not doing EUTD. So what would your reaction be if I didn't do EUTD today? I completely agree with Dev. And the process of not cheating should also never end. Unlike the song we sang today. What was it?
लिटरली हिंडर ruined my child. अभी अभी मेरा childhood ruin हुआ है after reading those lyrics. I was like, what the fuck? And I used to sing that song out loud, जोर जोर से हर fucking जगह, okay? So that's what Tranai they said ना कि दोनों साइड से like effort तो दोनों साइड से. Actually ये भी बड़ा subjective है कि क्या effort माना जाता है. Like I'll tell you मेरे केस में housemates एक कचरा बाहर मतलब वो करते हैं. ये लोग कुछ लोग एफर्ट मानते हैं, मेरे हिसाब से तो एफर्ट भी नहीं है और वो नहीं करते. बट नाउ आई थिंक इट इज एफर्ट बिकॉज एनीवेज. John, me good night. Good night, na 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 na. Good night, Pitradev. Good night, 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 good night. Good night, night, night. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं. कल मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स का मैं जब एग्जीबिशन कर रहा था एज अ स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैड अ पार्ट टू प्ले इन इट. आई टेल यू व्हाई. सबसे पहली चीज, दिस लैपटॉप. मेरे व्यूज क्या हैं? मेरे कोई व्यूज नहीं है कहीं भी. दैट्स वाई कोई मैं लिटरली कोई नहीं सुनता मेरे गाने. नो व्यूज. ये लैपटॉप, ये कवर, दिस इज ऑल पित्रदेव. ओके. एंड मैंने उस दिन अपना वो आदमी बन जरा प्लाक कार्ड लगा रखा था. उसमें माई प्रोफेसर केम लाइक, दिस आर्ट वर्क इज ब्यूटिफुल, हु मेड इट? एंड मैंने ना प्राउडली बोला, माई स्टूडेंट मेड इट. लाइक a student as like I used to teach music and like, oh wow, and like and फिर वो that's beautiful and like मैं पतला भी था, फिर हंसने लग गए and बड़ा अच्छा लगा मुझे. It's like I have I touch wood. I have had very less students, but I think I've had the best possible students. Like मेरे students सारे बहुत अच्छे हैं. उन सबने मेरे like बहुत किया है. This is I'm very grateful, Pitradev. Thank you. Like I think the instrument that I made was also like, there are a lot of things here I'm able to do because you brought this to me, the system. Trust me when I say it. It's crazy. Anyways. बिल्कुल बिल्कुल.